कंगना, सबसे पहले ना मैं आपसे जानना चाहती हूँ दैट यू आर नोन टू पिक अप हटके रोल्स. सबसे पहले तो आपकी पार की नज़र, और इसके साथ मुझे एक एडवर्टिजमेंट याद आ रहा है, बट आपकी पार की नज़र, आई हैव टू रियली टेल यू, बी इट दत्तो का वो एंटरटेनिंग कैरेक्टर, या फिर द फियर्स क्वीन जो कि हमें मणिकर्णिका में देखने को मिली, या फिर द टेलीविजन होस्ट जिसके बारे में सब लोग अब बात कर रहे हैं, या फिर ये सेक्सी बैडास किक एस स्पाई का रोल, और इतना एक्शन कर पाना, और वो भी पहली ऐसे फीमेल लीड बनना जो कि एक आउट एंड आउट एक्शन फिल्म इस लेवल का एक्शन करके दिखा रहे हैं. मैं आपसे एक्चुअली जानना चाहती हूँ कि आप ये खुद को चैलेंज देती हैं क्या हर बार कि चलो आज क्या चैलेंज उठाएंगे, आई हैव टू डू समथिंग डिफरेंट टुडे एज वेल. व्हाट इज योर डे लाइक? डू यू रियली थिंक लाइक दिस इन द मॉर्निंग? No, I think in so many ways, the world is also ready for women to take the lead. Absolutely. That is one aspect of it. Another is that I have had my own fair share of low points when I refused a lot of male-centric films and, Khan-led film or Kumar-led film or all kind of big hero films. And then everybody looked at me like, when you can see you have a vision and you have a vision for future and only you have it, then and nobody else has it, and they think, what's wrong with her? This is the best time of her life. I still remember people calling me when I refused to go to award functions, and this is like, what are you doing? This is the best time of your life. Why are you saying no to these films? Why aren't you entertaining award function? Why are you standing against fashion magazines? Why are you wasting your life? I said, why do they think I'm wasting my life? Why do they think if I've come so far, it's accidental? It wasn't, because I always thought that I also deserve as much as anybody else, and why should I, think of me as a lesser being? And I always had this vision that this is possible. This day is possible. Of course, I did not plan it, but I had the vision. I can't execute it alone. You need somebody like a Rezi or Deepak Ji, like a Dhakar director, a Dhakar producer, Sohail, a person who I would say that for a woman to have a successful journey, like so many men support her, right? So it's a combination of many things. I won't say that it is entirely accidental. I can't even say that, okay, I made it happen. So there is no a straight answer to this, but I had little vision and also many things came together, let's put it this way. Actually, आपने इतना कुछ जो सवाल खुद से पूछे हैं, मैं यहाँ पर बोलना चाहती हूँ, these are questions मैं नीचे ही उतर के सवाल पूछती हूँ, धरती से जुड़े हुए लोग हैं हम. These are questions that all of us as women should ask ourselves every day, every moment of our life. That is this really something that is going to enhance my personality as a woman? Is it going to actually make the life of others better? आप इतनी बखूबी कर रही हैं ये, थैंक यू सो मच. सबसे पहले तो फ्रॉम द एंटायर फ्रेटर्निटी आई वुड लाइक टू से थैंक यू सो मच. लेकिन मैंने शुरुआत में यहाँ पर स्टेज पर बुलाते हुए कहा था कि मुझे एक गिला शिकवा है आपसे. हाँ, बहुत ही ज़्यादा, मतलब तंग हो गई हूँ मैं, परेशान हो गई हूँ आपसे. और मेरी परेशानी ये है कि लुक एट योरसेल्फ, इतने हैंडसम, इतने अमेजिंग दिखने वाले इंसान रावण में विलन बन जाएंगे, ओम शांति ओम में विलन बन जाएंगे, अब यहाँ पर धाकड़ में फिर से विलन बन जाएंगे. क्या है? Why are you doing this to women like me? Why? I mean, we like you more because we like bad guys. But is that the reason why you're doing this? आपने आंसर भी बोल दिया. Oh. It's for you all. You all like bad guys. So is that the reason? Yeah, I try to make bad look good. Ooh, that's a nice statement to make. But you're also making a statement with your style. What is that style? How did you actually get into that kind of a character with that hair and those tattoos? It's amazing. It's got nothing to do with me. It's all him. Yeah, nothing. And Sheetal, who I think did the clothes and the look and designed all of that. Rezi had a very clear vision. And this is what he wanted. And I hope I can pull it off because it's quite bizarre, the style of this character. It's amazing, and actually that adds to the whole look of the film. जो मैं बार-बार कह रही हूँ कि एक Hollywood feel है इसमें. It's also because of the look that they've given you. It's amazing. Congratulations on that. But इसी से आपसे भी जानना चाहेंगे कि एक तरफ जब ऐसी स्टार कास्ट हो तो एक्साइटमेंट फील होती है, दूसरी तरफ प्रेशर भी महसूस हो सकता है कि ओ माय गॉड. सो व्हिच वन डिड यू फील, और वाज इट लाइक कभी ये कभी वो, या प्रेशर ज़्यादा महसूस हुआ? क्या सोच रहे थे आप?
Well, this is my first film, and look at this. You know, I I'm know. deeply humbled and very blessed. I think we made a very good film. You know, at least I think so. And please go enjoy it. I think Thank we also think the same thing, yeah. After watching the trailer, I think the feeling Thank is you. mutual. दिव्या, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये मैं बहुत लंबे समय से आपसे पूछना चाहती थी. Somehow रेडियो पे भी मेरी और आपकी कभी मुलाकात हुई नहीं. I'm so thankful to this stage कि मैं यहाँ पर आपसे मिल पा रही हूँ और आपसे पूछ पा रही हूँ कि आप कैसे कर लेती हैं ये. कमर्शियल सिनेमा हो या फिर आर्ट्सी फिल्म्स हो, पैरेलल सिनेमा हो, कंटेम्प्रेरी मूवीज़ हो, ऐसे कैरेक्टर्स और हर एक कैरेक्टर के साथ दिव्या की यू नो ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन दोनों तरह से आपकी पर्सनालिटी से हम लोगों की लाइकेबिलिटी और बढ़ती चली जाती है, हम और पसंद करने लग जाते हैं आपको. सो हाउ डू यू डू दिस एंड हाउ डू यू बैलेंस दीज डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेमास? I just feel that there is good cinema and bad cinema. So अच्छी फिल्में जो आपको मन को लगे कि ज़रूर करनी चाहिए, और आई थिंक आपकी गट जो होती है ना वो आपको बोलती है कि ये फट से कर लो. Like this happened with Dhakar when I got a call from Rezi, and there was everything correct about this film. मतलब लगा कि ये तो करनी ही है, and it's amazing that somebody has a vision to see you very differently from what you've done previously. That is such a high for an actor. That's such a great thing for an actor. And amazing role, superb co-actors. I mean, this is my first time I'm working with Kangana, and I've thoroughly enjoyed working with her. We have some beautiful scenes together. And Arjun, we've worked together in another artsy film called Last Year. So he's also one of those. With his good looks, he also does both. Yeah, that's it. So yes, and of course, I mean, Rezi has presented all of us so beautifully. When I look back in this film, it's only a very heartfelt smile that comes to my face. क्या बात है. मैं बहुत ही केयरफुली नीचे उतर के सोहेल आपसे पूछना चाहूँगी. मैं आपसे जानना चाहती थी ये कि यू नो मैं बहुत ही अच्छी फिल्मों को याद रखती हूँ, अच्छे सीन्स को जो अच्छी तरह से बनाया गया हो दिल को छू जाते हैं मेरे, इसीलिए हम बॉलीवुड प्रेमी हैं. 10 फिल्म की मुझे याद है जहाँ पर वो समय था कि एक्शन सीन को बॉलीवुड में रीडिफाइन कर दिया था आपकी उस फिल्म ने. जहाँ एक तरह की फिल्में आ रही थी वहीं एकदम ऐसा चीर फाड़ करके सामने वो फिल्म आई थी, and it was like, oh my God. And it's the same thing, you know, we just saw the trailer, and once again, you know, you see the trailer and you're like, oh my God, this is going to redefine the way we look at action in the Indian film industry. So how did you do this, and how do you make this possible each and every time? Thank you so much for talking about this. It's entire team, it's just not me. It's the vision what Rezi had, Arjun, Kangna, Deepak Bhai, Divya, everybody, and it's just we flew with Rezi's vision, and we just backed him the way he wanted to make the film from beginning. So he had that thing to make a great action film with a never seen before heroine doing that kind of an action. So yeah, we tried to achieve what we set out to, and I'm grateful to everybody here on stage that they have done a great job in the film, and I'm really happy for what we have achieved. And I must congratulate you because it's looking so powerful. Thank you so much. Yeah, and last but not the least, मैं आपसे भी दीपक जी जानना चाहूँगी. एक तो ना सबसे बड़ा काम आपने किया है कि स्टूडियो ही बन गया है अब तो, and you know congratulations on that सबसे पहले. And you're also presenting the film. You're the presenting partners and sponsors. Thank you so much for bringing a film this big to all of us. और आपसे मैं जानना चाहूँगी कि ये हॉलीवुड लेवल का प्रोडक्शन लग रहा है मुझे इस फिल्म में, एक्शन सीन्स लग रहे हैं. हाउ डिड यू पुट द फिल्म टुगेदर? कैसे ये पूरी की पूरी बन करके सामने आई है? मस्ट हैव बीन वेरी डिफिकल्ट, वेरी टफ. Yeah, so welcome everyone over here. So if you want to stand out, you have to do something different. Yeah. Yeah, so when Rezi Kaleem Bhai has brought me this project along with Sohail and Rezi, so I heard the script, very few lines I believe. Then I have seen the vision in this film, and I thought, okay, let's make this in a big way. So the teamwork happened. We have called the action directors from Hollywood. We have called the DOP from abroad, and yes, the result is in front of you. I think everyone will like this. I have to say this, I mean, their contribution to this film
is amazing. Starting with her, I mean, she has a great understanding of a screenplay and what she Yeah. comes up with. No doubt. I'm like, oh, I didn't think of that. So this one here, Divya, I sat with her at my house and we broke it down, her role. And my big brother here, I mean, he gave the credit to me, but as far as his role goes, he's brought so much to it. You will see it in the film. He's absolutely killed it. I want to ask a question to Kangana. I mean, I really pushed her physically. So do you want to tell us something about your training? First of all, I want to thank Rezi sir, because when he was making this film, so many people told him, he's a new director, that why do you want to take Kangana Ranaut for your first film? Thanks to you all, I have such a image that people, of course, they want newcomer directors and others also. So he put his foot down and he said, I want to work with Kangana in this film. If she doesn't do, I will not make this film. So that shows that, you know, there are still people in the world who are using their own mind to think, not getting influenced by what is being fed to them and what the perception that is being fed to them. So really, so wonderful that he took this. I mean, I knew it, that if I do a film, not in my entire career, I have left a film midway, or I have not finished, or I have not delivered, or I have not, you know, but still there is such an image. So a lot of people want him, and he still went for me, and I think I will be forever grateful to him for that, for having faith in me. And not, I mean, of course, we had worked in 1 or 2 ad films before, but still, that's just a one-day job. So he got me on board, and I've always been a very fit person. From my earlier days, starting from fashion to Krish to even Manikarnika, I've done a lot of action. But what happened in this film, I was not prepared for that. It was right after Talaivi. So I had gained, I had 20 kgs weight on me, and I had expected to lose it. But I didn't realize that in my 30s it will be very difficult. On top of that, I got hit by COVID, the Delta variant. And they were filming in Budapest. They couldn't delay the schedule. Within 1 month of my recovery, I was on the sets and doing action. Of course, every job has its own challenges, but when you are dealing with COVID recovery, you just don't know what to expect. And it was the most difficult phase as an actor that I went through. But you know, like this bunch of very delightful people who are appreciative of you and very cooperative of you, starting with the director and action directors and even Arjun for that matter. We used to rehearse before going to the sets, and it became a joyride. So I had a great time in spite of COVID and the weight put on and everything. I think we all had and a great in spite time. of you, whatever it is, he's very pushy. He goes all the way, all the way. There is no compromise in his vision whatsoever it may be. And you can't make a film like this unless you have people like Deepak and Sohail, because I agree. They didn't come in my way. Whatever I wanted, Deepak Bhai gave me. And of course, Kalim Bhai is sitting there. Kalim Bhai, big shout out. And there's some amazing people here. Dhruv, my background score. You know, my entire team is here. I think you guys should come in here. Rameshwar sir, where are you? There you are. He's a top ace editor from the industry. Wow. He has rocked the film, you know. Divya and Arjun, let's hear about your role also a little bit. You know, I feel really awkward when I have to keep discussing the role, because obviously every actor comes with a process and, you know, has to do that part. And it becomes exhausting because we go say, oh, I did this and I did that and the other. But I think what we've really had with this film is a lot of fun. The characters, I think each character has been very well defined. If it is Kangana's, Divya's, or mine, okay, or Shaswat's. All these characters are so to the point, brilliantly designed by Rezi, that we just had to go there, and the world that he created, we had to step into. And we kind of discovered these characters there on set, I think, more than anything else.
But for me to say I did this, that, the other, I think you should go experience this because it's really a phenomenal film. Something like this has never been done. I was very scared when Kangana had to do action because I was like, okay, you know, how is it going to be this thing? But action कुछ लोगों को जचता है और कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं जचता. And because it's like doing a dance. And Kangana is super flexible, which is a big advantage. Her body language, her expressions, and what she brought to the table while doing the action was phenomenal. कि मैं वाकई में डरने लगा कि ये मुझे मार ना दे. You know, but she's done a fantastic job. I've never seen an actor do action of this scale so realistically and so effortlessly and so wonderfully. You know, I'm not saying an actress, I'm saying an actor also. You know, for me, I've done a lot of action films. It comes something that comes naturally to me, and I know it's not easy to do. You have to have a tremendous amount of concentration and a lot of physical strength as well, and focus. And Kangana, well done. Thank That's you. really, really fantastic. And this one here, okay, who I really love, and we have some great chemistry in the movie, which I think I will really enjoy watching those scenes again and again when I get much older and I'm sitting one day on my couch and I have to see some memorable scenes that I have to watch. There'll definitely be some with Divya. And yes, and Sohail, Rezi, Deepak Bhai, he didn't know he was making such a big film. It just got bigger and bigger as we progressed. And so that's why we called it Dhakad. And then Sohail, who was the perfect person who would create the balance of, you know, the finance and the creativity. And I think what we've got here really is fantastic. There's this wonderful gentleman who's come and shot this film. His name is Tetsu-san. He is a very acclaimed DOP who is going to get married to Rezi very soon, and we will announce that when that happens. But Rezi almost killed him also. We'll talk about that later. But yeah, so we have a great, great team out there. Kaleem Bhai, you know, Rameshwar, Dhruv, everybody out here. We've had a great time. So it's nothing I want to say about my character. They go experience it. But there's a lot of chemistry in this movie. क्या बात है. Let's wait for some time and definitely we'll announce everything. Yes, we are working on a lot of projects. And definitely with Rezi also, I am doing some other project, next project. So yes, we are working on. I have something to say. Yes, please. I think India is going to get its first, you know, brooding action hero who's not a guy but a stunning woman. Oh yes, no doubt about that. On that very note, I think can we have some questions from our lovely media members here, please? एक mic pass करिए. Hi Kangana, towards your, you can see me. Ravi from ABP News. Kangana, अगर हम एक्शन फिल्मों की बात करें तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में हॉलीवुड की अगर हम बात करें, किल बिल है, वंडर वुमन, ग्लोबल लेवल पे बहुत बड़ी कामयाब फिल्में साबित होती हैं. लेकिन भारत में, इंडिया में और हिंदी फिल्मों की बात करें तो फीमेल लीड को लेकर ही फिल्में बनाने को लेकर बहुत झिझक होती है. और उस पर से एक एक्शन फिल्म जिसे आप लीड कर रही हैं, क्या एक कॉन्शियस एफर्ट था बहुत सालों से कि इस तरह की फिल्म बनाई जाए जिसमें आप लीड, बतौर लीड काम करें? एक और भी सवाल है, इसके बाद मैं पूछता हूँ. मैंने इसका जवाब दे दिया है कि फॉर मी इट वाज नॉट सो मच अबाउट पर्टिकुलरली एन एक्शन फिल्म कि मुझे एक्शन ही फिल्म करना है. इट वाज सिंपली अबाउट कि जितनी वैरायटी एक हीरो एक लाइफ टाइम में करता है. अब किसी भी हीरो का नाम उठा के ले लीजिए ना, चाहे हमारे जो भी कामयाब हीरो हैं, चाहे मिस्टर बच्चन हो गया, जो भी हो गए, वो अपनी लाइफ टाइम में जितनी वैरायटी ऑफ रोल्स करते हैं, तो मुझे एक महिला होने पर उतने वैरायटी ऑफ रोल्स क्यों नहीं मिल सकते? हमेशा मुझे एक वाइफ या गर्लफ्रेंड ही क्यों मिले? तो ये मेरी एक इतनी सी मेरा विजन था. लेकिन उसके ऊपर से मुझे इस तरह का रोल मिलेगा या कभी इंडियन सिनेमा इस मुकाम पे पहुंचेगा जहाँ पे एक सच अ बिग बजट फिल्म इंटरनेशनल लेवल पे बनी हुई, जिसमें आप कह रहे हैं कि
वेरियस वर्ल्ड आर्ट जो भी चाहे टेक्नीशियंस हो चाहे आर्टिस्ट हो वो इसमें जुड़े हुए हैं. ये इस तरह से होगा, मैंने ऑनेस्टली इट्स लिटिल अनबिलीवेबल फॉर आवर लाइफ टाइम टू सी इट, लेकिन इट्स नाइस, इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव थिंग फॉर आवर सिनेमा. एंड द क्रेडिट गोज़ टू द डायरेक्टर जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट जो है वो इसके बारे में सोचा. और अगर ये बहुत ज़्यादा कामयाब रहता है तो जिस तरह से क्वीन के बाद में एक पूरी एक लहर आई थी वुमेन सेंट्रिक फिल्मों की, उसी तरह से एक लहर आएगी जिस तरह से आप हॉलीवुड में देखते हैं काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड फिल्म्स या स्पाई थ्रिलर या लड़कियों के बहुत अच्छे सुपर हीरो रोल्स, उसकी एक लहर आएगी. एंड देन ऑफ कोर्स इट विल बी अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर. कंगना, एक छोटा सा सवाल और कि इसका जो एक्शन है वो हम देख सकते हैं, जैसे फॉरेन में भी फिल्म आ गया फॉरेन लोकेशंस में, और जिस तरह का स्टाइलाइज्ड एक्शन है, क्या दुनिया को ये दिखाने की भी कोशिश है कि हम भी हॉलीवुड से कम्पीट कर सकते हैं, हम भी ग्लोबल लेवल पर इस तरह की बड़ी एक्शन फिल्में बना सकते हैं? क्या ये कॉन्शियस एफर्ट है इस फिल्म के ज़रिए? बिल्कुल एफर्ट है. और अगर आप देखें तो अब हॉलीवुड की जितनी भी फिल्में हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा कर रही हैं यहाँ पे डब्ड वर्जन में. और काफ़ी लोगों को आदत हो गई है अब कि बहुत ज़्यादा पैमाने पे बनी हुई एक फ़िल्म हो गई या जिसमें जो है वर्ल्ड लेवल का जो है आर्टिस्ट हों, उसकी आदत अब लोगों को पड़ चुकी है. तो हमारा ये नहीं कहना है कि हम लोग भी उनके जैसे कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, पर ये जो अब चाहे टेक्नोलॉजी हो गई है या चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से या जितने भी हम लोगों को चीज़ें चाहे डिजिटली एक्सेसिबल है, तो वर्ल्ड इज़ बिकमिंग लाइक ऑफ अ ग्लोबल विलेज काइंड ऑफ एक फील आ रहा है. तो उसमें हम जो आज हमारी जो भी हमें एक्सेस है सब चीज़ों को लेकर, तो हम क्यों ना एक पूरे जो वर्ल्ड में जितने भी हम आर्टिस्ट हैं वी वर्क लाइक वन कम्युनिटी. वो हमारा जो है एंडेवर है इसमें कि हम जो है एज वन कम्युनिटी वी शुड वर्क एंड आवर फिल्म्स विल बी ऑन पार विद एनी ग्रेट फिल्म इंडस्ट्री, चाहे वो फिर अमेरिकन हो चाहे वो चाइनीज़ हो. एक छोटा सा सवाल, आखिरी सवाल. कंगना, अभी हाल ही में किच्चा सुदीप जो कन्नड़ के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, उन्होंने हिंदी फिल्म उन्होंने कमेंट किया था कि साउथ की फिल्में अब टेक ओवर कर रही हैं, बहुत चल रही हैं, और हिंदी एक नेशनल लैंग्वेज नहीं है, जिस पे अजय देवगन ने कमेंट किया था. बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई उस पर, पॉलिटिकल मामला भी हो गया. इस पर आप क्या इस कंट्रोवर्सी को किस तरह से देखती हैं, और हिंदी और साउथ का जो एक झगड़ा निर्माण हो रहा है, एक विवाद हो गया, उसको किस तरह से देखती हैं आप? देयर इज़ नो, अगर आप चाहते हैं कि आपको मैं एक डायरेक्ट आंसर दे दूं, देयर इज़ नो डायरेक्ट आंसर टू दिस, जबकि आप मेरी स्टेटमेंट से निकाल लेंगे एक डायरेक्ट आंसर खुद ही. बट इफ़ यू कैन गिव मी 2 minutes देन आई कैन गिव यू माई थॉट्स ऑन दिस सब्जेक्ट. यू नो, तो हमारा जो भी हमारा सिस्टम है, सोसाइटी है, उसमें ऑफ कोर्स वी आर अ कंट्री ऑफ लॉट ऑफ डिवर्सिटी ऑन लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स, यू नो, एंड हर एक का एक जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो अपने, चाहे मैं पहाड़ी हूँ, मैं अपने कल्चर पे अपनी लैंग्वेज पे गर्व महसूस करूं. लेकिन हमारा जैसे देश है, टू मेक इट वन यूनिट, हमें कोई तो थ्रेड चाहिए ना टू रन थ्रू इट, राइट? अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाए, अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करना है, तो जब इन लोगों ने बनाई तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया. अब जब आप कहते हैं कि मुझे एज तमिल इज़ एक्चुअली ओल्डर देन हिंदी, लेकिन उससे भी ओल्डर है संस्कृत. अगर आप मुझसे मेरा बयान पूछना चाहते हैं तो आई थिंक द नेशनल लैंग्वेज शुड बी संस्कृत, क्योंकि कन्नड़ा से तमिल से लेके गुजराती से लेके हिंदी सब उसी के से आई हुई हैं. तो संस्कृत को ना लेके हिंदी को क्यों बनाया, उसका जवाब मेरे पास नहीं है, राइट? वो उस टाइम के लिए हुए डिसीजंस हैं. लेकिन जब खालिस्तान की मांग होती है, जो वो कहते हैं कि हम हिंदी को नहीं मानते हैं, तो जब युवाओं को भटकाया जाता है, इट्स नॉट अबाउट दैट, दे आर डिनाइंग द कॉन्स्टिट्यूशन. यू अंडरस्टैंड दैट? तो जब आप कहते हैं कि मुझे तमिल, वो तमिल का भी मूवमेंट हुआ था, दे वांटेड अ सेपरेट नेशन. जब आप कहते हैं बंगाल रिपब्लिक की मांग करते हैं और कहते हैं कि आई डोंट कंसीडर हिंदी एज अ लैंग्वेज, देन यू आर नॉट डिनाइंग हिंदी. व्हाट यू आर डिनाइंग इज दिल्ली बीइंग द सेंटर ऑफ द गवर्नमेंट. अंडरस्टैंड? सो इस चीज़ के बहुत ज़्यादा लेयर्स हैं. तो जब आप इस चीज़ पे बात करते हैं तो आपको इन सब लेयर्स का अंदाज़ा होना चाहिए. तो जब आप हिंदी को डिनाई करते हैं तो जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, दिल्ली की सरकार को आप डिनाई कर रहे हैं, राइट? एम आई राइट और रॉन्ग? आप दिल्ली को नहीं मानते क्योंकि हमारा संविधान, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे किसी तरह के एक्ट बने, चाहे दिल्ली में जो भी सरकार करती है वो हिंदी में ही करती है ना.
अगर आप चाहे देश भी घूमते हैं, चाहे बाहर भी जाते हैं, जर्मन हो गई या स्पेनिश हो गया, फ्रेंच हो गया, दे आर वेरी प्राउड अबाउट देयर लैंग्वेज. लेकिन no matter how dark the colonial history is, fortunately or unfortunately, English has become that link. Today, even within the country, we are using English as the link to communicate. Should that be the link, or should Hindi or Sanskrit be that link? Or Tamil? We have to decide that. We have to take that call. So keeping all these in mind, a decisive call should be taken. As of now, हिंदी संविधान में हिंदी राष्ट्र भाषा है. तो जो अजय देवगन जी ने कहा कि हिंदी राष्ट्र भाषा है, तो उन्होंने वो गलत नहीं कहा. अगर आप मेरी पूरी बात का निचोड़ सिर्फ यही सुनेंगे तो वो आपकी कमी है. लेकिन अगर कोई ये कहता है कि कन्नड़ा इज ओल्डर देन हिंदी एंड सो इज तमिल, तो वो भी गलत नहीं कह रहे हैं. अगर मेरे हाथ में होगा तो आई थिंक संस्कृत इज द लेजिटिमेट लैंग्वेज, जिसके से जर्मन भी आई हुई है, इंग्लिश, फ्रेंच सब संस्कृत से स्टेम आउट हुए हैं. व्हाई डोंट वी हैव संस्कृत एज द नेशनल लैंग्वेज? व्हाई इट इज नॉट मैंडेटरी इन स्कूल्स? आई डोंट नो दैट. ओके, मेरा सवाल कई फिल्मों में आपके लिए एज एन एक्ट्रेस कितना फिजिकली चैलेंजिंग रहा टू डू एक्शन सीन्स सीक्वेंसेस? मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था, स्पेशली कमिंग फ्रॉम तलाईवी, क्योंकि मैंने 70 किलो वेट गेन किया था और मैंने अपने आप बॉडी को हमेशा बहुत फॉर ग्रांटेड लिया है. मैं पहाड़ी लड़की हूँ तो मैं बहुत ही फिट थी. लेकिन जब मैंने तलाईवी के लिए वेट गेन किया एंड आई वाज ऑलमोस्ट 33-34, तो उसके बाद मेरा वेट वो जाए ना, तो मुझे ये एक अलग शौक लगा कि यू नो माई बॉडी इज़ सो डिफरेंट नाउ. फिर उसमें ऑब्वियसली उसके बीच में मुझे वो एक्शन की भी ट्रेनिंग करनी पड़ती थी. तो फिर और शौक लगा कि बॉडी में वो एजिलिटी और वो स्टेमिना नहीं है. सो आई वाज लाइक दैट हीरो ना हु बाउंसेस बैक. फिटनेस फिल्मों में आप देखते होंगे, तो इट वाज लाइक दैट जर्नी वाज लाइक दैट. Kangna, hi, straight here, Russell from Bollywood Live. Kangna, first of all, absolutely the trailer is amazing. But there is a slight gripe also I have about this. Whenever we see such movies which are mounted on such a scale and it looks so slick, हम लोग सबसे पहले एक थॉट आता है इंडस्ट्री में भी और बाहर, और ऑब्वियसली इंडस्ट्री में बात चलती है तो बाहर ऑडियंस भी ये बात करती है, इट्स लुकिंग लाइक हॉलीवुड, इट्स लुकिंग लाइक दिस. इसमें भी जब टीजर आया था, लारा क्रॉफ्ट से कंपैरिजन हुए थे, लाफ कीता, किल बिल. डोंट यू थिंक सो दैट वी आर developing our own efforts and our own films by constantly having Hollywood comparison? China, Korea, they never did action movies. I agree, क्योंकि अगर आप देखें जो एजेंट अग्नि है वो हमारा अपना एक होम ग्रोन कैरेक्टर है. और जो भी इंटरपोल एजेंट है वो जिस तरह से रेजी सर ने पूरा उसको कॉन्सेप्चुअलाइज किया है, शी इज़ वेरी, पूरी फिल्म भोपाल में है, मध्य प्रदेश में, इंडियन पूरा उसमें टेरेन है, गवर्नमेंट, इंटरपोल, सारा हम लोगों का बहुत ही रस्टिक दिखाया हुआ है. सो ऑब्वियसली इसमें जैसे मैंने कहा कि द वर्ल्ड इज़ वन विलेज नाउ, यू नो, वन बिग प्लेस राइट नाउ वेयर एवरीबडी हैज़ दैट एक्सेस टू ईच अदर. तो अगर हम लोगों में वो इंटरनेशनल अपील आती है तो नेसेसरली द बेंचमार्क शुड नॉट बी हॉलीवुड. You know, we can make our own benchmarks and people before us have made such great films. जिन लोग हॉलीवुड लोग उनको benchmark बना के चलते हैं, चाहे सत्यजीत रे हो चाहे कोई हो, तो हम लोग भी अपना benchmark बना सकते हैं. I agree. Hi, this is Argupta here from Filmy Fever. I'm not finished. Kangna, one more thing. We would like to know who has been your favorite female action hero, probably in Hindi cinema or someone else. Which one you have really loved? हिंदी सिनेमा में तो एक्चुअली किसी ने अभी किसी को वो अपॉर्चुनिटी मिली नहीं है. रेखा जी थी, खून भरी मांग, हेमा जी, अंधा कानून. Of course, they've been great. They've been amazing for their times, and उन्होंने बहुत ही अच्छा, जो आज हम लोग जहाँ से शुरू करते हैं वो उन्होंने हमें वहाँ तक पहुँचाया हुआ है. जो भी लड़कियों का स्थान है और जो भी एज अ लीडिंग लेडी हम लोग इंजॉय करते हैं, प्रिविलेजेस, वो उन्होंने हमें दिए हुए हैं. Now our duty is to take it forward for the coming generation and take it notch higher, जहाँ पे हमें leading lady के जैसे privileges ना मिलके we get privileges of a hero on the set.
And Hi, final question, towards your one right, final question. once- When you are at all these films mounted on such a big scale in the south, वो लोग सीधा just even before the release, जैसे ट्रेलर आता है, even before that, वो लोग एक पैन इंडिया फिल्म का अनाउंसमेंट करते हैं कि ये पैन इंडिया है और ऑलरेडी रिलीज का मार्केट भी वो लोग ऐसे ही देखते हैं कि ये सारे टेरिटरीज में हम रिलीज करेंगे ये लैंग्वेजेस में. Dhakat is the perfect example of that kind of pan India scale. Why aren't we also taking these kind of movies and propagating it as pan India before the release? We are dubbing it in Tamil and Telugu and Kannada. So we are, of course, going to take it to the rest of the country. And I think this debate about South and North and South in films यहाँ आ रही हैं और ये कर रही है, it's so unfortunate. You know, they have always got this stepmotherly treatment, and that's why today it feels like a victory. It should have not been like this in the first place. You know, it should have not been like this, that we have not had a single hero from the South as a leading man in the Hindi film industry, as in like a successful one, the celebrated one. I've been talking about it, that how close-knit this circle is and how this operates. This is also an example of this, that how they don't allow outsiders. And now when they are coming to take their due, which is rightfully theirs, this country is theirs, and this is their due that they're taking. वो किसी की ये जो हम लोग ऐसे behave करते हैं ना कि वो यहाँ की screens ले रहे हैं किसी की territory में, वो किसी की territory में नहीं आ रही है, उन्हीं की ही screens हैं. ये पूरा देश उनका है, वो भारतीय हैं. तो ये इस तरह की आप प्लीज़ इस तरह से उनको देखना बंद करें, जिस तरह से यहाँ के लोगों की परसेप्शन, जो यहाँ के माई बाप बन के बैठे हुए हैं ना, उनके मुंह पे बहुत बड़ा थप्पड़ है और वो ये थप्पड़ डिजर्व करते हैं, क्योंकि दिस वाज लॉन्ग ड्यू, दिस वाज पेंडिंग फॉर देम, एंड दे विल टेक देयर ड्यू, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट दे आर. Also, brother. Towards your right. Yeah. This is Ravi Gupta. What's your name, buddy? What's your name? Russell, you know, film is an art form and it's universal. You know, so if it's looking in a certain way, our films in the 70s used to look like this, where there was composition, there was lighting, and then something happened. You know, so it's an art form. You know, it could go anywhere in the world, and if somebody embraces it, it's beautiful. Kangana, towards your right, slight middle. This is Ravi Gupta here from Filmy Fever. Real life में आप धाकड़ तो है ही हैं, बड़े पर्दे पर भी आप धाकड़ दिख रही है. आपने कहा कि हमारा खुद का बेंचमार्क होना चाहिए. आई थिंक यू हैव सेट अ बेंचमार्क, और बस आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप कितनी होपफुल है इस फिल्म के बाद, बेसिकली कुछ आप बताना चाहें. Like I said, you know, जैसे अगर ये इस तरह की फिल्म बहुत बड़े पैमाने पे सफलता हासिल करती है, तो एक दिस विल बी बिगनिंग ऑफ न्यू एज, न्यू एरा फॉर द फिल्म इंडस्ट्री, जैसे कि क्वीन के बाद हुआ था या डर्टी पिक्चर के बाद हुआ था. यू नो, देयर केम दिस वेव ऑफ, और आज कोई भी जब हम भी यहाँ पे ये फिल्म कर रहे हैं, तो पीपल डोंट सी इट एज अ फीमेल सेंट्रिक फिल्म. इट इज़ जस्ट अ बिग स्केल एक्शन फिल्म. This is because, you know, we have incessantly worked on this. और अब अगर यही फिल्मों को जो है छोटे बजट और कमिंग ऑफ एज मिक नौजवान फिल्म से उठा के अगर हम मेन स्ट्रीम में लेके आते हैं और उसको मेन स्ट्रीम बनाते हैं, बिग बजट इवेंट फेस्टिवल फिल्म्स, so it will be again a step ahead, you know, into that direction. So that's my hope, and I hope we achieve this. Kangana, you one more have question last to three Deepak questions. sir. Last three questions, please, Deepak and sir, the let's producer direct of the some film. questions towards the producers and directors as well. Please, I think we should restrict it to one question each. That will help. Yes, please, please, please. That's right. Can we just do that? I'm, And last I'm three Siraj questions. Syed. This question is to the director. I am Siraj Syed from filmfestivals.com. The question is that we have the state-of-the-art technology now available, and the fights and the chases and the spectacular effects that we see on the screen are a blend of the real thing and a lot of VFX and SFX. How much do you think has that reduced the risk element that actors have to go through? And what was it in your special case? Did you find it very, very dangerous in some situations? And how did you divide the real action and the
VFX and sound effects? Well, the kind of action we've done in this film is very, very grounded, and it's very real. You know, it's very different from what's happening in our country at the moment. So I was very clear I wanted to do action which is grounded and, you know, looks real. So very little CGI is going to be used. It's only for the muzzle flashes and stuff like that. But for the actors, they had to learn. They had to train, and I pushed them. You know, so technology is there to help you, but if you want to be in front of the screen, you have to push yourself. Otherwise, you can't make an action movie. It's as simple as that. Hi, Deepak sir, this is Ravi Gupta here again. Thank you. Towards your right. आपसे ये भी सवाल करना चाहूँगा. हमने देखा है कि कुछ फ्रेंचाइज फिल्में होती हैं, कुछ फ्रेंचाइज होती हैं जो 70 साल, 80 साल, 50 सालों से अभी भी सर्वाइव कर रही है. उनकी कोई भी फिल्म अभी भी अगर सिनेमाघरों में आती है तो लोग टूट पड़ते हैं. तो लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारी बॉलीवुड में, खास तौर पर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, फ्रेंचाइज फिल्मों को लेकर उतना सीरियसनेस नहीं देखा जा रहा. उसका कोई अगर नेक्स्ट पार्ट आता है तो आप देखेंगे कि लोग जो है मायूस हो जाते हैं. आप कितने होपफुल हैं धाकड़ से, क्योंकि मुझे लगता है इसके अंदर एक फ्रेंचाइज बनने का बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है और दूसरी फ्रेंचाइज फिल्में भी आप कर रहे हैं. सो क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, हमारी तैयारी हो चुकी है धाकड़ 2 की. यस, अमेजिंग. डेफिनेटली वी आर गोना डू धाकड़ 2 वेरी शॉर्टली. विल अनाउंस द फिल्म ऑल्सो. एंड सेकेंडली कि अगर पुरानी फिल्मों में अगर स्कोप है कि आज हम उसको रीमेक करके या उसका सीक्वल बना करके कर सकते हैं तो क्यों नहीं. इट्स ऑल डिपेंड कि सब्जेक्ट कैसा है, आज की तारीख में अपील करेगी कि नहीं करेगी. So definitely. Deepak, will you be taking Kangana only in also in Dhakad 2? Yeah, definitely. She is only our franchise. Definitely, we have to take her. There's no other question. Last question, please. Yeah. Okay, no, there's a question for Kangana. Hold on. कोई और होगी. Kangana ji. Kangana, there are many heroines, you know, I've spoken to recently. I don't remember their names, you know, and they wanted to start with, you know, action. You are defying them by doing an action role, you know, and this is killing. What message do you want to say that you are the beginner again for action roles? For me, like, you mean I am the initiator of this into female? Yes. I'm very privileged, I would say. And I'm honored to be the initiator of this movement. If this becomes something that will follow suit and a lot of other girls will do this after me, I will be honored. And I think this is precisely what I would say, that all the hard work and all the sacrifices that I've made, all the fights I've had in the past, all the battles I have fought have been worth it if this becomes a movement like female-centric films in the industry. Was it very tough? Thank you so much. Thank you so much. We are running short on time. We need to wrap this up. Hello. I hope you guys understand. We do need to wrap this up. Hello. Okay, ask, hello. please. Yeah. Okay, let's take 2 more questions. Yeah. Okay. Hi, Kangana. Preeti here from First India Filmy. Trailer is amazing. So, आपसे जानना चाहूँगी, आपकी लाइफ बहुत ही इंस्पायरिंग रही है, तो क्या आप मूवी अपनी लाइफ पे बनाना चाहेंगी या फिर क्या किसको देखना चाहेंगी अपने लाइफ पे मूवी अगर बनती है आपकी तो? हेलो. हाँ. या. मेरी लाइफ काफ़ी ड्रामेटिक है. या. और अगर मेरी लाइफ पे मूवी बनती है, I think it'll be a blockbuster. But पता नहीं कब भी बनेगी, because I think I have a lot to achieve. आप बताइए. Hi, Kangana. Kangana ji, can we have this question from here, please? Kangana ji. Yeah, please go ahead. Go ahead. No, just take that question. Kangana ji, नमस्ते. रेखा खान नमस्ते रेखा जी. सबसे पहले मैं पूरी टीम को बहुत सारी बधाई देना चाहूँगी. बहुत ही कमाल का ट्रेलर है, सबका काम बहुत अच्छा लग रहा है. आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं. मेरा सवाल आपसे है कंगना जी कि अभी आपने कहा कि भूमिकाओं के मामले में, किरदार के मामले में आपने वो कहते हैं ना कि वो जंग ली जहाँ पर आप क्वीन, तनु वेड्स मनु, मणिकर्णिका, पंगा और अब धाकड़, इस तरह के रोल्स आप कर रही हैं और उसमें आप सफल भी हैं. लेकिन एक लंबे अरसे से हम देखते हैं कि अभिनेत्रियों को, हीरोइंस को एक पे पैरिटी को लेकर के एक जो है, एक मेहनताना है,
उसको लेकर के भी एक लड़ाई लगातार मतलब लड़ते रहनी पड़ रही है। आप ऐसा मत कहिए, मेरे प्रोड्यूसर बोलेंगे अच्छा बाकियों को नहीं मिल रहे वैसे। आपने इनडायरेक्टली मेरा आंसर कर दिया है, तो मैं वही जानना चाह रही हूँ कि उस पर इनके सामने मत बोलिए, इनके सामने तो बिहेव लाइक यू नो, देखो मैं बेचारी लड़की, बोलेंगे अच्छा बाकियों को नहीं मिल रहे, तुम ही ले रही हो। नहीं नहीं, I am not underpaid, for sure I'm not underpaid today, I can say proudly, and thanks to everybody who gives me who makes me feel like I am valued and my work is valued. And I mean, thanks to Sohail, he's the one who's initiated this, and Deepak ji and all the men who have helped me through this journey. And today, yes, of course, there were times when I felt that why when I do the same work, why don't I get paid? But today, at this stage in my life, I am not underpaid. क्या बात है? Last question from here, please. We have to end the Q&A. Yeah, just में वायलेंस बहुत ही है, एंड लोगों को सिनेमा घरों में वायलेंस बहुत ही पसंद आते हैं। आई विश कि लोगों को वायलेंस बहुत ही पसंद आए, एंड लेकिन इन दिनों हमारे महाराष्ट्र में भी बहुत ही वायलेंस चल रहा है, कभी हनुमान चालीसा को लेकर तो कभी लाउड स्पीकर को लेकर। अगर आप I don't think that's an appropriate question for the evening. अभी तो मेरा नंबर आया, एक मिनट रुकिए। अगर आप हमारे स्टेट की सीएम होती, कंगना जी, अगर आप हमारे स्टेट की सीएम होती तो कैसे हैंडल करती आप ही? दैट्स इट। या कैन वी लाइक ये देखा आपने अभी ट्रेलर? हाँ जी देखा। वैसे ही। One last question, Kangna. In one of your posts. No, I'm not going to justify my posts here to you. No, I'm not answerable to you. What I write in my, check out my Instagram. I will write there again. Okay. Arjun, thank you so much, ladies and gentlemen. You were a great audience. Can we have a quick photo op? Yeah. Rameshwar, Kaleem bhai, Dhruv Ganekar, please. So much. Hunar. Hunar ji, can we have you also here? Hunar Mukut, can you please join us on stage for the photo op? Please. Hunar Mukut, can we please have you on stage? We are missing you here on stage. Thank you so much, ladies and gentlemen. The trailer is out now. And the film is going to be out on the 20th of May. Arjun, can we have you back on stage for the photo op? Three of y'all, please. इनका पीआर पता नहीं कहाँ है। Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Yeah, it was I'm fine. It was a funny start. Comedy add करके